As we all know, we are starting a series from Monday to Thursday at 11 a.m. in the morning. We'll be having the Hindu analysis. Today is Tuesday, that is 19th December. And we are here with the Hindu analysis of 19th December, that is today. If I'm audible and visible, just write in the comment section, yes sir, you're audible, so that we can start our session. So these two are important articles. First is 78, a member of parliament suspended, opposition calls it murder of democracy. Then there is an article talking about flood paralyzed life in southern Tamil Nadu, rescue relief operations on. So these two are the important articles. We will be discussing about it. Now, so basically we will be discussing about ki kya hua actually. So today, I mean yesterday, actually 78 member of parliament in total were suspended, and earlier we have seen suspension of 14 MPs. पहले भी कुछ दिन पहले 14 MPs got suspended, so total 92 MPs have been suspended. Okay, so यही था न्यूज में. So those suspended leaders are Lok Sabha leader of opposition Adhir Ranjan Chaudhary, leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary, and other MPs. Now you can see their names. In Rajya Sabha, almost 50% of the opposition strength has been depleted. Depleted मतलब reduce हो गई because they have been suspended and all. So these are actually, you should be knowing about it. On Lok Sabha, in Lok Sabha on Monday, 33 MPs were suspended after repeated adjournments and all. And तो Lok Sabha से ये अकेले 33 MPs को suspend कर दिया गया. These are the things. So total आपको याद रखना है. Just have an idea that 78 MPs earlier, now 14 MPs earlier, and now 78 MPs. So total 92 MPs, member of parliament, together from Lok Sabha and Rajya Sabha has been suspended so far. Yes, Sakti, that will be helpful in NDA exam as well, of course. ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, so wherever the questions come from current affairs, that would be helpful in that exam. तो कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आता है, ये क्लासेस जो है द हिंदू एनालिसिस हेल्पफुल होगा. ठीक है, यस यू कैन वॉच दैट. सो पार्लियामेंट विंटर सेशन लाइव है ना, आप देख सकते हो. सो yesterday 33 MPs from लोक सभा एंड 45 from राज्यसभा, ये दोनों मिला के 78 होता है ना. 78 MPs in total were suspended. इससे पहले 14 और earlier MPs were suspended है ना. So this is actually record highest ever suspension in a day. तो पार्लियामेंट के हिस्ट्री में पहली बार इतने सारे सस्पेंशन हुए. You should be knowing about it. Okay, that is what you should be knowing. हो सकता है ये सब एग्जाम में पूछ दे इस तरह से, highest suspension in a day and all. Okay, so just have a basic idea about it. Of course, the speaker takes the decision. तो decision कौन लेता है? Of course, the presiding officer we call, है ना. So the presiding officer has the final say. तो लोकसभा के केस में who is the presiding officer, and in राज्यसभा who is the presiding officer? बताइए. I am waiting for the answers. In Lok Sabha, who is the presiding officer? So the presiding officer in Lok Sabha is Speaker of Lok Sabha. And who is the Speaker of Lok Sabha? उनका नाम बताइए. And presiding officer of Rajya Sabha is Chairman of Rajya Sabha. And who is the Chairman of Rajya Sabha? Please tell me. I am waiting for the answers. Because ये सब basic चीजें और आपको पता होना चाहिए. Because these are asked in exam. Who is the Speaker of Lok Sabha? Who is the Chairman of Rajya Sabha? बताइए. I am waiting for the answers, guys. So the Speaker of Lok Sabha is Mr. Om Birla. ठीक है. And the Chairman of Rajya Sabha, हम लोगों ने बताया भी, Vice President is the ex officio chairperson of Rajya Sabha, है ना. Yes, Om Birla. Yes, D-Day, Ramesh, you all right? Good. Yes, Ramesh, Vice President is the Chairman of Rajya Sabha. We call it as who is the Chairperson or Chairman, ex officio Chairman of Rajya Sabha. So the answer is Vice President. And who is the Vice President? Mr. Jagdeep Dhankar is the Vice President of India. ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. Yes, Arva Punawala, very good. Ramesh, you all are right. So this you should be knowing it. These are basic things asked in any exam. किसी भी exam में ये सब basic चीजें पूछी जाती. Now, so what actually happened was both the Lok Sabha and the Rajya Sabha protest MPs or the opposition MPs were demanding a statement from Home Minister on last week's security breach in Lok Sabha, which led to the arrest of 6 people. Look, actually क्या हुआ था last पिछले हफ्ते, I mean on 13th December 2023. This we have discussed it yesterday as well. Okay, what happened was the security breach happened inside the Lok Sabha, and what happened was few people, I think 2, I guess, people entered inside it in the Lok Sabha, and they actually had something, smoke canister, something like that, and they started protesting, and the smoke came out inside the Lok Sabha and all. So that's what's considered as security breach. मतलब security को cross करके, and they entered inside it. Okay. Now, so basically the opposition MPs were demanding that the Home Minister, Mr. Amit Shah, should give the statement in the Parliament. मतलब वो एक तरह से जवाब दे पार्लियामेंट में आकर के
कि क्यों ऐसा हुआ और क्या इसका सोल्यूशन एंड ऑल, दैट इज व्हाट द ऑपोजिशन एमपीज वे डिमांडिंग, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। ओके यस। अच्छा, एक कमिटी होती है प्रिविलेजेस कमिटी, है ना, यही सस्पेंड मतलब प्रिविलेज कमिटी इज देयर एक्चुअली विच गिव रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सस्पेंशन एंड ऑल, एंड द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द स्पीकर इन लोकसभा एंड राज्यसभा चेयरमैन इन राज्यसभा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ठीक है, एक चीज होता है फ्लड्स पैरालाइज लाइफ इन सदर्न तमिलनाडु रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन। पैरालाइज मतलब क्या होता है? पैरालाइज एक्चुअली इज एक्चुअली अ डिजीज, पैरालिसिस। सो पैरालाइज मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी में अस्त व्यस्त हो गया, मतलब the people are not able to live their life properly, no job, no business, nothing is happening because the floods are actually causing I mean difficulty in movement of people and all, right? So Thoothukudi is actually in place, it's a place in Tamil Nadu. Overnight unprecedented rainfall and flooding paralyzed life in Tamil Nadu southern district, so Kanyakumari, Thoothukudi, Tirunelveli Valley, so ये सब ये एकदम यहाँ पे मिलेगा आपको। दिस इज तमिलनाडु, तो एकदम साउथ में यहाँ पर समवेयर हियर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, एक साइक्लोन भी आया था रिसेंटली, आई मीन आई थिंक लास्ट मंथ और 15-20 डेज बैक इट वाज इन द न्यूज, जो तमिलनाडु को हिट किया था, ऐसे करके आया था, एंड इट हिट द तमिलनाडु। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट साइक्लोन? कोई बता सकता है? I mean, I think 15-20 days back it was in the news. This cyclone actually hit the state of Tamil Nadu. What is the name of that cyclone? Anyone? I am waiting for the answers. So the right answer actually, देखो ये इसका रूट था, इस साइक्लोन का यहाँ से ऐसे आया था और यहाँ जाकर के तमिलनाडु के रीजन में हिट किया था। Okay, so the answer is cyclone Michuang. So this was the cyclone. I don't know the pronunciation. I think Mishang पढ़ेंगे या Michuang पढ़ेंगे। So basically this was named by which country? Please tell me. Bangladesh, India, Myanmar, Thailand. किसने इस साइक्लोन को नेम किया था? Actually this was in the news 15-20 days back. It hit the eastern coast of Tamil Nadu and all. So आपको ये बताना है कि इसको किस कंट्री ने नेम किया था। These are very important things. ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में। What is the right answer? बताइए। So the right answer is शिवानी आर्य। अभिमन्यु सर हैज डन अ स्पेसिफिक क्लास फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक क्लास किया है। द यूट्यूब द वीडियो इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज प्लीज वॉच दैट सेशन वेयर ही हैज डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दैट, कि कितने रैंक में कौन सा स्कोर में कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज वॉच दैट सेम यूट्यूब चैनल पे, देयर इज अ सेशन फॉर द स्पेशल सेशन फॉर दैट। यस, हियर द राइट आंसर एक्चुअली इज म्यांमार। आप देखो म्यांमार ने साइक्लोन मिशुआंग नाम रखा था। We have discussed it, how the namings are being done and all. ठीक है, so C is the right answer to this question. ठीक है, yes, D Dare, MSCT law, yes, you all are right. C is the right answer. ठीक है, omnibus telecom bill in Lok Sabha legislation to streamline regulation and all. Okay, now omnibus का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है, देखो omnibus का मतलब होता है volume containing several books previously published separately. मतलब ये हुआ, यहाँ पे चूंकि किताब की बात तो नहीं हो रही, मतलब this will be a law which will actually cover the laws the previous, I mean let's say earlier there were multiple laws, जैसे मान लो example बता रहे, there were 5 laws. I'm just giving example. Now a new law will be made where actually all the 5 laws provision will be mentioned. यानी सारे different कानून को बना के एक बना दिया जाए, है ना? That is the idea about it. Telecom bill in Lok Sabha legislation to streamline regulation. Okay, so like for example the Telegraph Act 1885, देखो एक बहुत पुराना law है जिसको अभी रिपील करेगा ना, Telegraph Act. This is 1885 law. This is British time and this was used in telecom. अब आप देखो टेलीग्राफ उस जमाने में यूज होता है ब्रिटिश के टाइम पर। अभी नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरनेट, है ना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। सो यस, ऑफ कोर्स वी नीड टू चेंज द लॉज अकॉर्डिंगली, है ना। इंट्रोड्यूस इन लोकसभा रिप्लेसेस 138-year-old लॉ, अलाउज इंटरसेप्शन राइट ऑफ वे, स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन, इसी की भी बात हो रही है। So this was introduced by Minister of Electronics and Information Technology. He is also having Ministry of Railways. He is also having Ministry of Communication. इनका नाम क्या है? Can anyone tell me who is this person? So his name is Mr. Ashwini Vaishnav. Okay, so just have an idea about that. ठीक है, okay. Instead of licensing, the bill refers only to authorization that will have to be obtained by a telecom operators and all. That's what you should be knowing it. Fair. तो इसमें अभी इतना डिटेल नहीं जाना है. Let's wait for it, है ना. Then we'll get to know. The bill requires telecom customers to undergo biometric authentication. Biometric का मतलब होता है जैसे आधार में आप क्या देते ना, when you register your Aadhaar, you give your retina and a fingerprint. So these are all actually called as biometrics. ठीक है.
दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है. Okay, just before moving on, we are having please download our app, go to CLAT section, and we are having this CLAT success kit is available, mini mocks, ebooks, study plans, etc. is being provided. And we are having CLAT 2025 comprehensive course. If you are planning for next year, you can go for this course. Call on this number 9538895678 पे. अच्छा, कुछ लोग 2024 में OLET एग्जाम से नहीं, अदर लॉ इंटरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जामिया, क्लैट, जामिया, स्लैट, MHCT. For them also we are having a course, so download our app, go to CLAT section, there is a provision for talk to counselor, वहां पे जाना and there you can call ठीक है, on the counselor and all. Now the next is editorial, a blow for the rights of the legislature in law making. ठीक है. Okay, so this is an article regarding written by Mr. PDT Acharya. He is a former Secretary General of Lok Sabha. So basically he is talking about actually in a landmark judgment delivered on November, the state of Punjab versus Principal Secretary of Governor of Punjab and other, the Chief Justice of India gave a curative interpretation of 200 and all. अब देखो, एक article है article 200. We have discussed earlier also, and again I am discussing it. See, when a legislative assembly or if there is legislative council, if both, I mean, in the case of Punjab, we do not have legislative council. We have only one house, that's legislative assembly. If it passes a law, तो क्या क्या हो सकता है? It passes a bill, so it will be sent to the governor. अब गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं? So that's mentioned in article 200. ठीक है, क्या क्या पावर्स है देखते हैं. So पहले लिखा है if a bill has been passed by legislative assembly of the state or having state legislative council, if in that case तो legislative council also. अगर legislative council exist करता है तो दोनों हाउस, अगर एक exist करता है तो एक ही हाउस है ना. अगर पास किया गया तो अब गवर्नर के पास है, अब गवर्नर क्या कर सकते हैं? सो द गवर्नर हैव शैल डिक्लेयर आइदर हिज एसेंट टू द बिल. तो क्या क्या कर सकते हैं अगर मान लीजिए गवर्नर के पास आए? सो फर्स्ट द गवर्नर हैज द पावर टू गिव एसेंट टू द बिल. एसेंट मतलब होता है ओके कर देना, पास द बिल एंड इट विल बिकम एन एक्ट. ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं. सेकेंड, ही विथहोल्ड्स द एसेंट. ठीक है ना, विथहोल्ड्स द एसेंट देयर फ्रॉम और दैट ही तो विथहोल्ड्स द एसेंट का मतलब होता है रिजेक्ट द बिल. विथहोल्ड एसेंट मतलब होता है रिजेक्ट द बिल. ये कर सकते हैं कि नहीं, एक्ट नहीं बनेगा. फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं? ही रिजर्व्स द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. और क्या कर सकते हैं गवर्नर? गवर्नर विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट कि आप देख लीजिए वेदर यू वांट टू साइन इट और नॉट, है ना. सो रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं बिल. Now, other is एक और provision है, provided that the governor as soon as possible after the presentation to him for the bill for assent return the bill if it is not a money bill. एक काम और ये कर सकते हैं कि वापस भेज दें. इसको कहते हैं return the bill for reconsideration. Return the bill for reconsideration. दोबारा वापस भेज दे बिल को कि आप एक बार और देखिए. Okay, but there is one condition. It should not be a money bill. यानी मनी बिल को वापस नहीं भेजा जा सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, इवन इन द केस ऑफ पार्लियामेंट दिस इज द केस. ठीक है, विद द मैसेज दैट द हाउस है ना कि क्या रीजन है ना. ओके, बट इसमें और भी अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो इसमें यह है कि इफ द गवर्नर हैज रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अगेन, देन द गवर्नर इज सपोज्ड टू साइन. अगर गवर्नर साहब ने वापस भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली को और लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर पास कर दिया तो गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा. एक दूसरा चीज, एक और चीज होता है कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. एक केस में, आई मीन ये दिस इज द गवर्नर्स डिस्क्रिशन, बट एक केस में कंपलसरी हो जाता है. इन व्हाट केस दिस इज कंपलसरी? दैट गवर्नर इज मस्ट रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट इफ द बिल इज अफेक्टिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. अगर कोई ऐसा बिल है लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया जो कि हाई कोर्ट के पावर्स को असर कर रहा है तो गवर्नर नहीं साइन कर सकते, उनको प्रेसिडेंट को ही भेजना पड़ेगा. दैट इज कंपलसरी. ओके, ये सारा जिस्ट इस आर्टिकल में मेंशन है, मैंने आपको यहीं पे सारा बता दिया. इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? यू गॉट इट? ठीक है, तो इसी सब की बस बात कही गई है इसमें. ठीक है ना. इफ द से दैट असेंबली आफ्टर सच रीजन पासेस द बिल और विदाउट अमेंडमेंट द गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड द एसेंट, है ना. जब दोबारा असेंबली ने भेजा तो गवर्नर को साइन करना ही होता है. सो नाउ ही इज गोइंग वेरी मच इन डिटेल एंड ऑल. इतना डिटेल नहीं जाना है. सो ही इज एक्चुअली गोइंग वर्ड बाय वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप रिगार्डिंग द जजमेंट्स. तो उतना आपको नहीं जाना. फॉर यू दैट इज मोर देन इनफ, है ना.
Now, but there is still an area which can be exploited by governors to frustrate lawmaking, and also that is what he is saying कि हाँ अच्छा एक चीज जो मसला ये है ना कि इसमें टाइम लिमिट नहीं मेंशन है. जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे लिखा है ना कि इफ द गवर्नर सेंड्स बैक द बिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन सेंड इट बैक टू द गवर्नर, देन गवर्नर इज सपोज टू साइन, इट्स कंपलसरी. अब इसमें कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन है. इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है जो कई बार हाईलाइट किया गया कि देयर इज नो टाइम लिमिट, कि अब गवर्नर के पास आया and governor is not signing a bill. I'm just giving any example, किसी भी state का हो सकता है, just have for example purpose. So there is no timeline limit कि okay the governor is supposed to sign within 3 months 6 months, so no deadline is there. So if the governor do not sign it, उसको हम लोग कहते हैं pocket veto, and pocket veto is not directly mentioned in the constitution. ऐसा कुछ pocket veto concept mention नहीं है, लेकिन अगर चूंकि ये बात नहीं mention है कि खास कौन से इतना महीना या इतना दिन के अंदर इनको कर ही देना है, ठीक है, तो उस केस में अपने आप एक बाय डिफॉल्ट एक कॉन्सेप्ट पॉकेट वीटो उभर के आता है. इट मींस दैट इफ द गवर्नर इज नॉट डूइंग एनीथिंग देन इट बिकम्स, आई मीन द बिल विल नॉट बिकम एन एक्ट, एंड दैट इज एन इशू, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, है ना. ठीक है, हाँ. Okay, yes, the judgment says that if the governor decides to withhold the assent, he has to send it back to the assembly immediately for reconsideration. है ना, ये सब तो हो गया, है ना. So we सब बता रहे हैं, since the presentation means consideration during government official will affect take the bill, है ना. तो इसे बताया भी गया कि कौन से केस में, अगर देखो लिखा ना कि हाई कोर्ट्स के अगर पावर को रेफर कर रहा है, if it is affecting the powers of high court, then the president is the governor is supposed to pass the bill compulsorily to the president, है ना. Mandatory to reserve to the president कौन सा होगा, if it is affecting the power of high court. ठीक है, ये मैंने बता दिया. Okay, therefore these are the things you should be knowing about it. So recently some governors के issue जैसे केरला में, पंजाब में there have been some incidents, especially अभी जैसे केरला में हुआ था वाइस चांसलर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, है ना. So these are the things you should be knowing about it. Now the author here is talking about the ordinance making power as well. So which article deals with the ordinance making power of the governor? 123, 213, 124 or 217? What is the right answer? बताइए. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर कौन से आर्टिकल डील करता है? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. यस, एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. इसके बारे में उन्होंने ऑथर ने डिस्कस किया, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. ओके, सो द राइट आंसर इज 213. देखो अगर गवर्नर की बात की जाए 213 एट द सेंट्रल लेवल, इफ द प्रेसिडेंट इज देयर, सो द आंसर इज ऑप्शन ए. सो हियर द आंसर इज बी. 213 आर्टिकल टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ठीक है, 213 deals with the ordinance making power of governor. Under this provision, in certain cases, the governor can promulgate an ordinance only with the instruction of the president. ठीक है, ठीक है ना. तो ये सब बात हो रही है. एक और प्रोविजन है रिगार्डिंग इट. द सेकंड प्लेस विद द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट assent is 1254. The clause 2 of 254 talks about state law and an item and concurrent list will prevail even if there's. हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है. देखो there is union law. तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है? यूनियन द पार्लियामेंट विल मेक लॉज. स्टेट लिस्ट में स्टेट विल मेक लॉज. लेकिन एक प्रोविजन होता है कंकरेंट लिस्ट, वेयर बोथ कैन मेक लॉज. होता है कि नहीं? कंकरेंट लिस्ट में द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. अगर इफ देयर इज कंट्राडिक्शन बिटवीन द टू लॉज, एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाई यानी यूनियन लॉ ने लॉ बनाई और स्टेट ने लॉ बनाया, एंड इफ बोथ इज कंट्राडिक्टिंग, देन विच लॉ विल प्रिवेल? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कंकरेंट लिस्ट के अंदर और सेम उसी टॉपिक पर स्टेट ने लॉ बनाया, दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल. ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि द पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है आर्टिकल 254 में, दैट्स मेंशन्ड. नाउ व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? द एक्सेप्शन सेज दैट इफ अ स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ बिल अंडर कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के अंडर में एक बिल पास किया जो कि विच इज कंट्राडिक्टरी टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, और उसको गवर्नर को भेजा. The law is made under concurrent list contradictory to law made by parliament. तब तो ये नहीं बनना चाहिए. But if the governor reserves it for presidential assent and the president signs it, then in that case only in that state the state law will prevail over the union law. ये एक प्रोविजन होता है. You got it? समझ गए ना? यानी एक खास पर्टिकुलर स्टेट में, मान लो पंजाब में, I'm just giving example, in पंजाब में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली ने कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाया और वो कानून पर ऑलरेडी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है और ये वाला लॉ जो है कंट्राडिक्टरी टू द पार्लियामेंट्री लॉ है, बट द गवर्नर सेंड्स इट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया. तो उस स्टेट में नहीं, पंजाब स्टेट में स्टेट लॉ चलेगा
rather than यूनियन का लॉ चलेगा या पार्लियामेंट का लॉ चलेगा, बट ओनली इन दैट स्टेट बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज साइंड इट. ठीक है, यू गॉट इट? ये समझ में आया? दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, है ना. सो दैट this would mean that a bill on a concurrent subject can or needs to be sent to the president for assent only if it contains provision repugnant to the existing central law. ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट को तभी भेजेंगे जब वो सेंट्रल लॉ से कंट्राडिक्ट कर रहा है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट. तो उस स्टेट में स्टेट लॉ चलेगा, ना कि यूनियन लॉ चलेगा. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर. होपफुली यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव ऑन. लेजिस्लेटिव डिक्लाइन, अब साइड में एक एडिटोरियल है. A denial of legislative debate furthers democratic backsliding. तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब this is actually an editorial. So the editorial is written by mostly the Hindu editors or the editorial board सब में लिखा था. editorial board जो होती है the Hindu की, वो लोग लिखते हैं. Okay, so they have actually criticized the recent suspension of MPs and all. 78 MPs have been suspended this time. Earlier 14, so total 92 MPs have been suspended. लिखा ना? Okay, so that is what they are talking about it. So basically the hallmark of functioning democracy is deliberation. तो deliberative democracy की बात होती है. Deliberative democracy का मतलब होता है a democracy where actually there is deliberation, talks, discussion, debate before making a bill. तो deliberative democracy का मतलब होता है जहां लोग healthy debates होता है कानून बनाने से पहले, है ना. That's is talking about, the author is talking about. ठीक है, so they are actually not happy. They are criticizing the suspension of these MPs, opposition MPs. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन. नीचे चलते हैं हम लोग. एक आर्टिकल है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ बलवॉक अगेंस्ट माओइज्म. आपको पता होगा माओइज्म, नक्सलिज्म आर द सेम थिंग एंड ऑल, राइट? नाउ तो ये बता क्या रहे हैं कि सॉल्यूशन दे रहे हैं. ही इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ही इज गिविंग अ सॉल्यूशन. दैट बलवॉक मतलब होता है एक तरह से आंसर टू द, है ना, यहाँ पर जवाब. सो ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट आंसर टू द माओइज्म, टू एंड और माओइज्म इन इंडिया. दैट इज व्हाट द ऑथर हैज रिटन. अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है? Grassroots democracy means third tier government, है ना. This is also called as democratic decentralization. That is what it's calling, is talking about. तो अगर ये कह रहे हैं कि if we are strengthening the democratic decentralization, the panchayati raj institution and all, then the Maoism will wither away. That is what the author's opinion is. ठीक है. Who among the following is considered as father of local self government? In a third tier government या democratic decentralization, इसी को तो कहते हैं democratic decentralization, or what we call it as third tier government. Okay, so who is father of local self government? Third tier government कैसे होगा? पंचायती राज institution, urban local bodies, these things we have taught in our paid classes as well, detail में पढ़ाया है ना. So father of local self government, yes, पंचायती राज and all, yes Ramesh, very good. So who is considered as father of local self government? Lord Mountbatten, Lord Ripon, Lord Cornwallis, Lord Dalhousie. What is the right answer? Yes, very good. Arva Poonawalla, Ramesh. Lord Ripon is considered as father of local self government, है ना. So B is the right answer. Which of the following amendments inserted constitutional provisions regarding panchayats? 91st, 73rd, 74th, 93rd. कौन सा अमेंडमेंट ने? इसीलिए 24 अप्रैल को ये इन्फोर्स में आया था. So 24 अप्रैल is celebrated as National पंचायती राज डे. National पंचायती राज डे. ओके, यस. इससे पहले का बी आंसर था. यस, हर्षवर्धन, यू ऑल वर राइट. इसका आंसर बताइए. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पंचायत से रिलेटेड किस आर्टिकल है? 73rd अमेंडमेंट ने. ठीक है. और 74th ने जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटेड, वार्ड काउंसिलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दीज आर द थिंग्स. 73rd अमेंडमेंट एक्चुअली इंसर्टेड प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत. यस रमेश, अरवा पूनावाला, यू ऑल राइट. हाँ, लॉर्ड रिपन होगा इसका आंसर. हाँ. Okay, now the next one. So basically this is being talked about. तो वो बता ये रहे हैं कि recently elections हुआ छत्तीसगढ़ में. देखो बता रहे हैं, the assembly elections happened in the state of Chhattisgarh. The equation in the context of tribal votes did matter immensely and all. Actually कि why is talking about छत्तीसगढ़? देखो ये छत्तीसगढ़ है ना, तो जो ये रीजन है ना, this region, I'm making it with red pen. तो ये वाला जो रीजन है, this region is quite affected with Maoism और नक्सलिज्म जिसको कहिए, या Maoism कहिए. Okay, left wing extremism भी कहते हैं. So especially the southern portion of Chhattisgarh, the Bastar district, the Bastar region is quite affected with Naxalism and all. तो इसी की वो बात कर रहे हैं, है ना. देखो particularly Bastar लिखा ना है. So ये जो साउथ है ना, जो छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, this is Bastar region. Okay.
So that is what he's talking. Maoist insurgency in the country presently thrives in the tribal region of Chhattisgarh, especially the Bastar region. And he's saying that to begin with, as reported by the media, voter turnout in Maoist affected area was as low as 3 to 4%. बस 3-4% वोटिंग था कहाँ, बीजापुर एंड कोंता में. तो ये जो है ना, देखो ये छत्तीसगढ़ है ना, दिस इज छत्तीसगढ़. तो ये जो हुआ, ये एक बीजापुर हुआ, ठीक है. एक बीजापुर कर्नाटक में भी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीजापुर इन छत्तीसगढ़ और कोंता, ठीक है. तो ये जो है ना कोंता, यहाँ पे कहीं पे आपको कोंता मिलेगा. ओके, तो छत्तीसगढ़ और ये पूरा जो रीजन है ना, मतलब दिस वन आई एम मेकिंग इट विद पर्पल पेन, ये वाला जो रीजन है, दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज बस्तर, and it is very much affected with left-wing extremism, yeah, Maoism. Okay, that is what you should be knowing about it. There were several issues that shaped this issue on which political parties contested. However, no single issue addressed the challenging of resolving the Maoist conundrum and all. तो सबसे पहले क्या है कि वोटर टर्नआउट बहुत कम है. It means perhaps they might be boycotting it. शायद वो बाइकआउट कर रहे हैं या इस तरह का कि दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन वोटिंग. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डेमोक्रेसी में कि मोर पीपल शुड कम आउट एंड वोट. तो व्हाट वी कॉल इट एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मजबूत तब होती है जब वोटर टर्नआउट इज हाई एज पॉसिबल. जितने ज्यादा लोग आएंगे और वोट करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगी डेमोक्रेसी. अगर आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है, सो यू कैन मार्क फॉर नोटा एज वेल, ठीक है. अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ला दिया है ना, जैसे मान ली बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम है, आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है, सो द लास्ट वन हियर द नोटा वर्ड इज मेंशन, यू कैन प्रेस दैट. आप आओ नोटा पे दबाओ, जो मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, बिकॉज दिस विल एक्सप्रेस की ओके यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कैंडिडेट, यू डू नॉट लाइक, सो यू हैव वोटेड फॉर इट. So that is the main idea, that everyone should come out and press the button. I mean, come out and vote for it. That's the idea of standing of democracy. But अगर आप यहाँ देखोगे तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम था, 3 से 4% बस था. मतलब अगर 100 रजिस्टर्ड वोटर है तो 3 या 4 ही लोग वोट करने आए, बाकी 96-97% people did not come out, which is of course a not very good thing for democracy. Democracy is varied connotation for the tribal population inhabiting the regions with ongoing Maoist insurgency. तो ये बता रहे हैं कि सब रीजन है Maoist affected रीजन है ना. तो जो मेन इंपावरमेंट होता है डेमोक्रेसी है ना, एम्पावर्स पीपल. कहा जाता है कि डेमोक्रेसी, द मेन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल. यानी जो डेमोक्रेसी में पावर होता है वो आम जनता के पास होता है, बिकॉज द कॉमन मैन कैन वोट एंड मेक समवन अ सीएम और अ पीएम और एमपी एमएलए एंड ऑल, राइट. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब वो बता रहे कि इन माओइस्ट अफेक्टेड रीजन देयर इज अ पैरेलल गवर्नमेंट दैट्स कॉल्ड एज जनता सरकार. तो अपना पैरेलल सरकार चलाते हैं, जनता सरकार उसको कहते हैं. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. दिस एस्पेक्ट इज मोर और लेस अप्रिशिएटेड बाय लोकल ट्राइबल एंड ऑल. So that is what he is talking about. Then वो पेशा की बात करें, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज. देखो दो तरह का शेड्यूल होता है, एक फिफ्थ शेड्यूल होता है ना, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल. दीज आर द टू शेड्यूल्स टॉकिंग इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल एरियाज. ये जो होता है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट एरियाज में होता है. फिफ्थ शेड्यूल एक्चुअली द ट्राइबल एरियाज है ना को फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है. सो देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग इट. So if the panchayats have been extended in the fifth schedule areas, that's called as PESA. Special law has been made, panchayat extension to schedule areas. मतलब ये है जो शेड्यूल एरियाज यानी ट्राइबल एरियाज है वहां भी पंचायत होने चाहिए टू स्ट्रेंथन द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इन द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. That envisions the empowerment of Gram Sabhas as the sole authority to govern various aspects of socio-economic lives of the tribal community in respect of jurisdiction. And the intent behind that was to bring people at the grassroots level face to face with the government and all. ठीक है. This could render the Maoist whose influence is retreating and all. तो ये बता रहे कि अगर PESA Act becomes successful and all, ठीक है, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो इससे जो है माओइज्म वगैरह रिड्यूस हो जाएगी एंड ऑल, है ना. इफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन द पंचायत्स हैव बीन मेड स्ट्रॉन्गर देन ऑफ कोर्स it will stand in the it will reduce the Maoist effect and all. तो इसी की वो मेन इनफैक्ट बात कर रहे हैं उधर. Now साइड में एक आर्टिकल थी, केरला गवर्नर्स गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट रिजल्ट इन बेलिजरेंट प्रोटेस्ट. बेलिजरेंट मतलब होता है टसल, है ना, कॉन्फ्लिक्ट. सो आपको पता है रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज वी हैव सीन सम टसल बिटवीन द केरला चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ केरला ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चांसलर्स, है ना. सेनेट भी होता है यूनिवर्सिटीज में, एक सेनेट होता है, चांसलर, है ना. Then of course in universities appointment and all, and especially regarding the bills and all, है ना. So that was in the news. Now opinion page में एक आर्टिकल है द फॉलोइंग आउट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एडिटोरियल के ऑपोजिट में होता है, पेज नंबर 7 में, दैट्स कॉल्ड एज ओपिनियन. उसमें टॉप एक आर्टिकल थी रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. So first of all, these are the questions. In fact, question पास में पूछा भी गया, which are the following schedule talks about anti defection law? 9th schedule, 10th schedule, 11th schedule, 12th schedule.
एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल बात करता है इसकी? What is the right answer? This was asked this year also, I think Jamia City बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. Yes, Ramesh, very good. 10th schedule is the right answer to this question. And which of the following amendments brought the anti-defection law? Yes, Priya Chavan, you all are right. Arva Punawala. कौन सा amendment anti-defection law लेके आया था? What is the right answer? Yes, the right answer to this question is, इससे पहले का बी था. यस, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट बाय 52nd अमेंडमेंट 1985. ये भी पूछा था एग्जाम में. सी इज द राइट आंसर. यस, प्रिया चवन, रमेश, यू ऑल राइट, है ना. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी. सी इज द राइट आंसर. यस, हर्षवर्धन, यू ऑल राइट, है ना. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल है, व्हाट डज COP28 मीन फॉर सिटीज. अब देखो व्हाट इज COP28, ये क्या है, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया. प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है ना. आई हैव डन अ सेपरेट सेशन इन UN कॉन्फ्रेंस COP28 से रिलेटेड. सो प्लीज गो एंड वॉच इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव डन सम क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, फिर मैं इसके पास्ट में भी गया, पास्ट हिस्ट्री में मैंने बताया है COP28 से रिलेटेड. सो प्लीज गो एंड वॉच इट. हियर आई हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. ठीक है, तो जैसे लॉस एंड डैमेज फंड की भी बात की जा रही है. सो गो एंड रीड अबाउट दिस एज वेल, लॉस एंड डैमेज फंड एंड ऑल. ठीक है, ठीक है. सो जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है, जैसे कहाँ पे लिखा है ना, दिस द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट एंड ऑल, आई हैव डिस्कस्ड इट इन दिस क्लास. प्लीज गो एंड वॉच इट. दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. ये जरूर देखिएगा अगर आप नेक्स्ट ईयर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है. जैसे कोई OLET का एग्जाम है, MBA का, कुछ लोग CUET का बोल रहे हैं, कुछ सम पीपल आर सेइंग ND एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वेयरएवर जीके एंड करंट अफेयर्स इज आस्क्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, ओके ओके. लेट्स मूव ऑन. कुछ क्विज वगैरह है रिगार्डिंग द पूर्ण स्वराज एंड ऑल. ठीक है, तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. चलिए आप बताइए. पूर्ण स्वराज दिवस was celebrated by Indian National Congress on 19 December 1929, 26 December 1949, 26 January 1930, 26 January 1950. पूर्ण स्वराज दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा? एनीवन? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. यस, पूर्ण स्वराज दिवस was celebrated by Indian National Congress on, yes, हर्षवर्धन राइट, 26 जनवरी 1930. yes, रमेश. तो एक्चुअली क्या था, दिसंबर 1929 में एक्चुअली इन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज डिसाइडेड दैट दे विल बी सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी 1930 एज पूर्ण स्वराज दिवस एंड ऑल. आई हैव टॉट दिस इन पेड क्लासेस, है ना. So yes, Arva Punawala, Ramesh, you are right. She is the right answer. Swaraj is my birthright and I shall have it. This statement was given by whom? BG Tilak, VD Savarkar, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore. किसने ये स्टेटमेंट दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ठीक है, अरे जो यहाँ मेंशन है ना, इनकी फोटो लगी हुई और नीचे लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफाई दिस पर्सन हुज मोस्ट पॉपुलर कोट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो इनको आप पहचानिए. इनका एक बहुत फेमस कोट था. बताइए किसके बारे में बात हो रही है? यस, वेरी गुड प्रिया चवन. राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. तो इनका जो आंसर है जो ये है, आप भेज सकते हो इनको आंसर. ठीक है, इन्होंने लिखा ना, प्लीज सेंड इन योर आंसर्स टू dailyquiz@thehindu.co.in. तो आप आंसर्स भेजिए, इसका भेजिए और दोनों फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है. इसका तो आप आंसर कर सकते हो ना विजुअल क्वेश्चंस में. ठीक है, सो सेंड देम द आंसर्स. देख, ओके, यस, ठीक है. यस, हाँ. सो रमेश, राइट आंसर इज ए. वेरी गुड. हाँ, ये सर्वर होने वाला लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था दिसंबर में. हाँ, ओके, है ना. ओके, वन मोर थिंग इज, जैसे बिजनेस में है कि डायरेक्ट टैक्स स्वेल्स एंड ऑल. अब देखो इतना आपको नहीं जाना, बट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सो गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इसको पढ़ के आइएगा. ठीक है, गो एंड रीड इट. ओके, एक और वर्ल्ड पेज में आर्टिकल थी, इजिप्ट प्रेसिडेंट LCC इलेक्टेड फॉर द 6th टर्म विद 89.6% वोट. So PM Modi congratulates Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi on being re-elected as the president. ठीक है, so he is from Egypt, है ना. Here is India, this Africa की country है ना, and Abdel Fattah al-Sisi has been re-elected. Okay, now एक और आर्टिकल थी, BP suspends Red Sea shipping transit after attacks by Houthis,
है ना, ब्रिटिश की कंपनी है BP, उन्होंने सस्पेंड कर दी कि रेड सी से कोई शिप नहीं जाएगी. सो आई होप वी हैड डिस्कस्ड इट यस्टरडे आल्सो. जैसे मान लीजिए इंग्लैंड की एक शिप है, ऐसे होकर के आ रही होगी, ऐसे समथिंग जा रही होगी, मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ जा रही होगी, तो यहाँ पर है सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल से होके गुजर रहे होंगे. फिर यहाँ पर हाउतीज ने एक्चुअली यमन में देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज हाउतीज, दे हैव कैप्चर्ड इट इन रेड सी. ओके, दिस शिप एंड ऑल, एक दो शिप कैप्चर हो गई थी, अभी काफी न्यूज में था. एंड दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल नॉट सेंड थ्रू रेड सी. रेड सी इसको कहते हैं, ये वाला जो है, दिस इज रेड सी. ओके, यस. Okay, yes, so that is what you should be knowing it, है ना. यमन है यहाँ पे, जो this place strait is called as Strait of Bab al Mandab, है ना. इसे पूछते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है, I've seen Bab al Mandab is the strait here. Okay, yes. हाँ, direct tax paid by the person on whom it is imposed, indirect tax paid by the intermediary. Yes, Arva Punawala, very good, you have answered it. Direct tax and indirect tax का difference आपने बता दिया. Yes, है ना, you should be knowing about it, direct tax, indirect tax and all. Okay, yes, customized mRNA is the next frontier in personalized medicine. देखो ये क्यों क्वेश्चन आ रहा है, तो mRNA जो है ना, इसके लिए जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिस ईयर हैज बीन गिवन फॉर व्हाट, फॉर दिस mRNA वैक्सीन के लिए दिया गया है. ठीक है, सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन हु आर द 2 विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023. तो इस बार जो है mRNA वैक्सीन यानी मैसेंजर RNA वैक्सीन के लिए, जैसे फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, है ना, दीज आर mRNA वैक्सीन, इसके रिसर्च के लिए दिया गया है this year Nobel Prize in Medicine, and that is why they are talking about this mRNA vaccine. So please write in the comment section after the class is over who are the 2 winners of Nobel Prize in Medicine 2023. ठीक है, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.